Yes. Yes, hello everyone. Good morning. Uh, I hope you people are doing well. This class is based on the topic OneOnto Function. Yes, in the previous lecture also we discussed this topic, and we discussed in detail that what is a OneOnto function, what is an onto function, and today's class will be on exercise 1.2. Before we begin with the first question, let's have a quick recap of 1.1 and ontoness. Right. You remember what was 1.1 function? This function is 1.1, and this function what you say is not 1.1. Why? Because C here has two pre-images, more than one pre-image, right? So if a point in codomain is being shared by more than one domain point, then the function is not 1.1, right? And apart from this, some more mathematical definitions we saw, like fx equal to f5 implies x equal to y. Right? For same image, the respective pre-images should be same, isn't it? And some more key points we saw that we will discuss later on. But roughly speaking, what is the meaning of one-oneness? One-oneness means that different domain points should take different images. Two domain points should not take same image. Correct? One. And then onto function. Here also let us see the example. Right? This one, you decide whether it is onto or not. And this one, is it onto? This is not onto, but this is onto. Right? Definition is what? Definition is that if range is same as codomain, range is saying one is onto, right? If all the codomain points have pre-images, that's onto. If any codomain point is such which doesn't have a pre-image, then that function is not onto. सीधे सपाट शब्दों में कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेज पॉइंट्स होने चाहिए, तब वो फंक्शन onto होगा. एक भी पॉइंट कोडोमेन में अगर ऐसा मिल गया जो किसी की इमेज नहीं है और उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, then the function won't be onto, right? In other simplest words, I can say onto implied by range is same as codomain. Right? And we saw one more definition that for every y in codomain, there should exist some x in domain such that fx equal to y. Right? So that function is onto. So I request you all that please revise all the definitions, one-oneness and ontoness, and right. And then things will be more clear and more easy to understand. Okay. Now let us begin our exercise. Exercise 1.2. Have a look. Exercise 1.2 question says that first one says that show that the function f from r star to r star given by fx equal to 1 upon x is 1,1 and onto. That's right. And r star, what does it mean here?
R star is a set of all non-zero real numbers. So R star means non-zero real. Zero हटा दिया मैंने. Okay, nice. And the rule is fx equal to 1 upon x. Okay. Show that the function is 1, 1 and onto. So there are ways, many ways. Let us begin with any one method. We just now revised that to prove a function the one-oneness of the function, if x and y are the elements of domain, then fx equal to fy should imply x equal to y. No? If it is one, this is the definition of one-oneness. Correct? So, how to prove it? Start with let fx equal to fy. Okay? Now you analyze it and analyze it, and furthermore, and in the end, you should bring the conclusion that x equal to y. So let us see. Fx equal to fy means what? Fx meaning is 1 upon x. So 1 upon x equal to 1 upon y. Right? And if I cross multiply, what will I get? I will get y equal to x, which means x equal to y. Right? So it means, so f is 1. Right? Because x and y are non-zero elements, so 1 upon x and 1 upon y will be defined certainly, which concludes x equal to y. Now, so f is 1. Now, we have to prove that this function is onto. So, if you remember the definition of onto-ness, I am revising. Onto, to prove a function is onto, you just prove that range is equal to codomain. Right? Speak like this, or you can speak that for every y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that fx equal to y. So there are two definitions of onto which finally say the same thing, right? So let us find its range. Simple. Let us find its range. And to find how to find range, this work it was in class 11 syllabus of relations and function chapter, right? So do you remember we are going to find out range? Do you remember how the way is begin with let y equal to fx? Okay. Write the meaning of fx. What is fx here? Fx is 1 upon x. Very nice. Then the next step is express x in terms of y. So y equal to 1 upon x. How to write x in terms of y? I can write x equal to 1 upon y. Right? And now you check that for what values of y this x is real and member of domain. What is the domain? This is the domain. Means you find out for what values of y x will be a real number. X will be, if you see it here, x will be a real number for every value of y except 1. You know which value of y will not be allowed here? Because y is in denominator. So y cannot be 0. Rest of all values of y can be taken here, and x in that respect will be real only. So y cannot be 0. So finally ranges, you can take all real numbers, but 0 is not allowed. This is the range. Right? Revising how we find range. To find the range, the method is always we start with let y equal to fx. Meaning of fx you write. Then express x in terms of y, which we have got here, x equal to 1 upon y. Now you check that what the values of y are allowed to be taken. So that x comes within the domain. Right? Here the domain is r minus 0. So you have to check that what values of y are allowed. And here it came r minus 0. Now this is the range. Now check whether this range is same as codomain.
Is it? Yes. So what? Range is equal to codomain means what? Function is onto. This is. But some more thing they are asking if you see the question in your exercise. They are asking if the domain R star is replaced by N and codomain being same as R star. They are asking that let us make some change and instead of domain R star, let us take N. So if I take a function f from naturals to R minus 0, then whether the result will remain same, they are asking. So let me write, this is net and naturals 1, 2, 3, 4, 5, etc. And this is an entire real line will come here. I am drawing, but 0 is not there, so 0 I am drawing empty circle, and before that minus 1, minus 2, and each के सारे points and 1 and 2 and all in between points, continuous line is there. Right. Now they are asking check whether the result will remain same. अब एक बात कि जब कभी भी डोमेन नेचुरल नंबर हो और इंटीजर हो, right, or even a smaller set हो, the best method to check one-one and ontoness is that you draw arrow diagram. Arrow diagram, right? जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स पे बात करते वक्त देखा था. You know how to draw arrow diagram? Rule you keep, remember if x was 1 upon x, now send the images. 1, what should be the image? 1 upon 1. मतलब 1. Okay, nice. 2 image should be 1 upon 2. Right? Here it will like 1 upon 2. 2 image will be 1 upon 2. 3 image will be 1 upon 3. Isn't it? 4 image will be 1 upon 4. Right? तो सभी डिफरेंट पॉइंट भी जा रहे हैं. वन वननेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स वन वन 6 है, वो इन पिछली इमेजेस में तो जाएगा, तो नई इमेज लेगा 1.6 लेगा. तो एवरी टाइम the points of domain are going to different images. That's why the function is 1 1. Isn't it? You draw arrow diagram and just write directly. If you want to write any explanation, you can write the explanation that different domain points are taking different image. Function is 1 1. Correct. अब बात आती है ontoness की. तो ontoness के लिए जो है ध्यान रखिए definition क्या है? Range equal to codomain. Range जानते हैं आप लोग? Range means set of image points. Image points पे आप गिने चुने 0, 1, 1/2, 1/3, बस. बाकी तो कोडोमेन एकदम खुला पड़ा है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं. बाकी तो कुछ पॉइंट्स इमेज पॉइंट्स नहीं. किसी एक को कोड कर लीजिए कि 2 has no pre-image. है ना? 2 का 2 in codomain has no pre-image, so not onto. ठीक है? 1 1 है but not onto. तो मैं ये कह रहा हूँ कि when the domain is R or any other uncountable subset of R, go with this method. If domain is natural or integer, arrow diagram is better. Right? ये बात हम आगे ध्यान रखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करेंगे. So good. Are you getting the things? Right. I would suggest that notebook work completion itself is a time-taking task. So better to keep your notebook also and keep writing, because हम तो यहाँ पे time ले रहे हैं ना, 10 minutes explain करने में ले रहे हैं for one question. So आपको तो 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा. 8 minutes में आप उसको बाकी लिख सकते हैं अच्छे से. Question number 2, without any delay, let's see. Here also they are asking us to check whether the function is 1 1 and onto or not. Let us check. Let us check question number 2. Check the injectivity.
अच्छा नाम यूज किया. Check the injectivity and surjectivity of the following functions. The first one is the various parts of it. First part is f function from naturals to naturals such that fx equal to x square. Injectivity means one-oneness, surjectivity means onto-ness. तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया. वहां पे हम लोगों ने एक बात नोट की कि अगर डोमेन R है या कोई और अनकाउंटेबल सबसेट है R का, अनकाउंटेबल, जिसमें हम ऐसे एरो डायग्राम नहीं ड्रॉ, वहां पर वो जो डेफिनेशन है फॉर one-oneness of x equal to fy implies x equal to y, that is more useful. And for onto-ness, just find the range and check whether it is same as codomain or not. That is more useful. But if the domain is natural or integer or even smaller, then it is easy question actually. Draw the arrow diagram and get your results and exact results, perfect results. Less chance of error will be there. So I am going to draw the arrow diagram. ये बात समझ में आ गई तो do it for the solution. Begin, do yourself, get the result and tell me. Okay, let me assign the images. Fx equal to x square, right? So 1 will go to 1, 2 will go to 4, 3 will go to 9, and 4 will go to 16, and etc. and etc. Tell the answer, everyone, if you understood that what should be its result. Is it 1 1? Is it 1 1? क्या डोमेन पॉइंट्स अलग अलग इमेजेस ले रहे हैं? यहाँ तो ले रहे हैं अलग अलग. नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट्स क्या कोई चांस बनता है कि सेम मिले? 1 1. यस 1 1, क्योंकि अलग अलग ही जाएंगे. 4 जाएगा 16 पे और 5 जाएगा 25 पे और 10 जाएगा 100 पे, और कोई चांस नहीं कि सेम मिल रहे. ऑफ कोर्स इट इज 1 1. there is no doubt about it. What about its onto-ness? Onto. Pragya is saying not onto. Kushi, yes किसके लिए? 1 1 के लिए, onto के लिए. Pritha is saying 1 1. Divyansh not on. Yes, not on. Onto क्यों नहीं है? लॉजिक भी लिख देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लॉजिक लिख देंगे तो अच्छी बात है ना. चलिए इस पार्ट के लिए लिख लेते हैं कि 1 1 because different domain points take different images. Different domain points take different images. ठीक है. Onto-ness because range is not same as codomain. ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो. range is equal to range यहाँ पे क्या है? 1 4 9 और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो, and it is not same as codomain. It is not same as codomain. So what? Not onto. एक ही. चलिए अच्छी बात है. एक दो पार्ट और डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके लिए वर्क छोड़ता हूँ. सेकेंड पार्ट है लुक. And if you can do yourself, do write completely and finally write your answer in your live chat. Part number भी लिख दीजिएगा, है? Second part. और जिसको समझ में आ गया start solving yourself and otherwise हमारे साथ देखते रहिए. Z to Z. Second part is saying f from integers to integers such that fx equals to x square. Do this thing. जैसे की बात तय हुई थी कि अगर डोमेन नेचुरल है या इंटीजर है, एरो डायग्राम ज्यादा मुफीद रहता है. ड्रॉ कर लेते हैं एरो डायग्राम, राइट? Z integers and integers, you know, integers contain negatives also. So 0 1 2 3 4 and etc. -1 -2 -3 etc. So here are also 0 1 2 3 4 and -1 and -2 and -3 etc. Shall I assign the images? 0 x square, right? So 0 square means 0. 1 will go to 1, 2 will go to 4, 3 will go to 9,
-1 will go to 1, -1 whole square is 1, -2 whole square is 4, and -3 whole square is 9. आप अपना कंक्लूजन निकाल लीजिए। सेकेंड पार्ट का 1 1 है कि नहीं है? 1 1 तो नहीं है। -1 और 1 तो एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, है कि नहीं? -1 and 1 तो एक ही इमेज ले रहे हैं, 1 not 1 1, isn't it? What about ontoness? क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेज पॉइंट्स हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। -1 तो नेगेटिव, -1 क्या -2 -3 नेगेटिव्स तो इमेज पॉइंट्स है ही नहीं, बिल्कुल भी ऑनटो नहीं है। नॉट ऑनटो, नॉट ऑनटो, है ना? ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है कि नहीं? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इजी है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में भी एक में डोमेन नेचुरल है और दूसरे में डोमेन इंटीजर है। एरो डायग्राम इज बेस्ट, बट यू हैव टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, नॉट डायरेक्टली यू राइट योर रिजल्ट। ड्रॉ, assign the images, and then you write, right? Third part also, let us see, we have one more method actually. तो एक मेथड तो हो गया डेफिनेशन, वननेस के लिए भी, ऑन्टोनेस के लिए भी। दूसरा मेथड हो गया एरो डायग्राम। लेकिन एरो डायग्राम आसान तो है, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल वही है, वही इसको यूज करेंगे जहां पर डोमेन नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, ठीक है? जहां कहीं पे भी आपको डोमेन नेचुरल नंबर या इंटीजर दिख जाए या और छोटा सेट, वहां पे फटाक से एरो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए और अपने आंसर्स लिख दीजिए। थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे किया जाए। लेट्स राइट द क्वेश्चन f r to r, reals to reals, such that fx equal to x square. Fx equal to x square. So because the domain is r and not natural or z, I should not draw arrow diagram here because there will be so many images. So arrow diagram should not be drawn. Definition can be used to prove oneness and ontoness, just like first part we discussed. One more method is the graph method. Okay. So let us see graph method. First of all, let me draw the graph of fx equal to x square. Fx equal to x square is a very popular, very familiar function. It looks like u, right? It always takes positive values, so it will always lie along positive y-axis, right? Then for oneness, there is a method that we applied and called as horizontal line test. Horizontal line test कि oneness अगर चेक करनी है तो क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन? ये नहीं मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये नाइफ है, चाकू, और इस नाइफ से इस कर्व को हॉरिजॉन्टली कट लगाना है। लगा दिया मैंने, और अगर वो कट एक से ज्यादा पॉइंट पे आए, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, तो वो शर्तिया वन नहीं है। क्यों वन नहीं है? इसलिए नहीं होगा कि सपोज मैंने कट लगाया तो इसका अर्थ है सपोज ये पॉइंट कुछ भी है 2 है, देन उसका प्री इमेज यहां और यहां से मिलेगा, क्योंकि 2 विल हैव मोर देन प्री इमेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वन। आप तो ऐसे ध्यान रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स नॉट वन दिस, right? Because any horizontal line cuts the curve at more than one point. That's why it is not one. And for ontoness के लिए रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज कैसे निकालते हैं? If the graph is given, if the graph is given, to find out range, the way is that from the curve you take the projection of curve on y-axis. Projection means shadow. Draw the perpendiculars on y-axis, right? And perpendiculars will fall on this part of y-axis, right? So many perpendiculars if you draw, the foot of perpendiculars will fall here. This is range.
So range is how much? Range is this part of x-axis. You know how it will be written? Starting from 0 up to infinity. 0 to infinity. 0 included, right? Infinity always excluded. This is the range. Now for alternate check whether the range is same as codomain. No, not on. Correct? तो ग्राफ मेथड भी हमारे लिए इजी है, एप्लीकेबल है, जहां कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं वहां अप्लाई करने दीजिए, बहुत आसान रहेगा, है ना। ऑफ कोर्स हम जो है हमें ग्राफ आना चाहिए जॉब में, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। आई एम लीविंग फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 3 says and you decide which method we should apply. ओवरऑल हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। एक तो है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, है ना। द अदर मेथड इज एरो डायग्राम एंड द थर्ड मेथड इज ग्राफ मेथड। तीनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है। द थर्ड क्वेश्चन इज that prove that the greatest integer function f from R to R given by fx equal to greatest x is neither 1 1 nor onto graph. This step function की बोलते हैं। This is the graph. This is the graph, okay? This is the graph, and now you check and decide whether it is 1 1 or not. कोई जवाब? Any one of you? Tracy Sharma present sir. होमवर्क, बहुत सारे नाम ऐसे दिख रहे हैं उसमें जिसमें वर्क उन्होंने मुझे नहीं सबमिट किया है। सभी लोग मुझे अपना वर्क सबमिट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, राइट स्टूडेंट्स? रिजल्ट 1 1 और नॉट। क्या करना है 1 1 के लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। मतलब कहां है मेरा चार्ट? ये रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड चेक वेदर इट गिव्स मोर देन वन कट। कट तो क्या इसने पूरी लाइन को ही ओवरलैप कर दिया। Infinitely many points of intersection, right? We are also find take the horizontal line, draw the horizontal line. Infinitely many points of intersection. अगर ये 1 1 होता, कहीं से भी मैं लाइन ड्रॉ करूँ horizontal, एक से ज्यादा पॉइंट से पे कट नहीं करना था, तो यहाँ पूरी लाइन को ही ओवरलैप कर दिया। Infinitely many points of intersection, बिल्कुल भी 1 1 नहीं, not 1 1, है ना। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, वो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब बात समझ में आ गई जिन लोगों ने लिखा है नॉट 1 1, इतना तो तय है। बिल्कुल। ऑनटूनेस के बारे में बता दो, इसकी रेंज बता दो जरा। बोलो रेंज क्या है? रेंज, हाँ नॉट 1 1 ठीक है। रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स फंक्शन? एनीबॉडी रिमेंबर? z। बिल्कुल। कैसे निकाला? निकाला ऐसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिए y एक्सिस पे, है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे, यहां पे बस यहां पे आएगा इतना, यहां से जो इतना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराए ये, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराए तो ये, -1 से ड्रॉप कराए परपेंडिकुलर तो ये। बस ये जो डार्क ये बस यही है इमेज पॉइंट्स। तो इनको मैं लिखूंगा ऐसे सेट फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा? 0 1 2 -1 -2, और ये क्या है? z। सेम एज कोडोमेन। क्या है कोडोमेन हमारा? नॉट इक्वल टू कोडोमेन। हाँ, और रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होते तो क्या होता है? नॉट इक्वल। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने रेंज बताया। आई एम वेरी हैप्पी दैट इसका मतलब है कि आपको बात समझ में आ रही है। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ सो आंसर इज रेडी। नॉट 1 1 नॉट 1 2। तो ग्राफ में हमें ज्यादा आसान पड़ा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स हम अदर मेथड से भी कर सकते हैं। फोर्थ भी ग्राफ मेथड से करेंगे। फोर्थ क्या है? fx इक्वल टू मॉड्यूलस x।
है ना, neither one nor one to prove करना है आप मॉडुलस x आपके लिए बहुत फैमिलियर फंक्शन है, अभी लिख लीजिए, है ना, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करके फोर्थ डाल के आंसर लिख सकते हैं आप, अगर बताना चाहें मुझे। तब तक हम बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन का भी एक स्पेशल नेम है, वो कहलाता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आल्सो बेटर यू डू ऑन योर ओन। Question number sixth. Sixth, it is good if you can draw. Friends, I would suggest that please write all the questions in sequence. Right? So leaving space would be better. And very easy ones are there. So again, I skip here, fourth and fifth. By graph method, they will be easiest. Easy to yourself. Sixth question पे बात कर लेते हैं। Sixth question they are saying let A is a set, B is a set, and F is equal to, ये फंक्शन उन्होंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स के मैनर में दिया है। Okay, nice. Be a function from A to B, show that F is a one. Draw the arrow diagram and say. ये first point होते हैं domain point. सेकेंड पॉइंट होते हैं क्या, वो डोमेन पॉइंट्स। लॉजिक क्या लिखेंगे, लॉजिक लिख देंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डोमेन टेक डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1 1। तो एरो डायग्राम यू ड्रॉ एंड राइट द लॉजिक। एनफ। सेवेंथ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, in each of the following cases is same whether the function is 1 1, onto or bijective. Bijective means both, it should be 1 1 also, it should be onto also. The first part is f function from R to R, ये लिखना बहुत जरूरी है, स्पेशली onto नेस तो हम बता ही नहीं सकते कि कोडोमेन अगर हमें नहीं पता ये कहां से कहां वर्क कर रहा है, प्लीज मेंशन इट इन योर नोट। So f function from R to R given by fx equal to 3 minus 4x. Arrow diagram we will not draw because the domain is R, uncountable set. It is difficult to assign uncountable number of images there, right? Instead, graph can be, instead of arrow diagram, graph can be a method. We can draw the graph of this equation y equal to 3 minus 4x. But बहुत graph कर लिए, थोड़ा conventional method से वर्क करते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन, definition method से याद है आपको 1 1s कैसे प्रूव करते थे? To prove that this is 1 1, you know how to begin. We should begin with let y equal to fx. No. Let fx equal to fy. And in the end you have to bring x equal to y. फिर क्या होगा? आ जाएगा बेहद आसानी से। This is fx, fy क्या होगा? बस x की जगह y रख दीजिए। This is fy, 3 3 का, and minus 4 को भी sacrifice करा दीजिए। What do you conclude? It gives you x equal to y. So f is 1. Correct. And for proving onto-ness, begin with let y equal to fx and find out the range. For onto-ness, let y equal to fx. Fx means what here? 3 minus 4x. Then find out range. अब range find out करने के लिए next method क्या था? Next method was that express x in terms of y. Means minus 4x is equal to 3 minus y. Right, so x is equal to 1 upon minus 4, 3 minus 1. Right, and then you think and analyze that what values of y are allowed. Which values of y are allowed?
which makes x as a member of domain, which is R. Simply you have to check that for what values of y x will be a real number. Always x will be a real number. Y कुछ भी डाल दीजिए, पॉजिटिव डाल दीजिए, नेगेटिव डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, y x will always be a real number. Any value of y will be a long range is R. Ranges R, and this is same as codomain. So f is onto. Earlier it was one also, onto also. So means what? So f is bijective actually. One onto both. Hence it is bijective. Second part also, you can try yourself whether it is one or not, onto or not. Shall we discuss? Let us see. ऑनलाइन क्लासेस में हम इसको एक्सटेंड भी जितनी मर्जी चाहे टीचर कर ले, बच्चों के पास ऑप्शन है बस लीव करने का, वॉचिंग नाउ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ बाद में करके देख सकते हैं. अनलाइक अवर रेगुलर क्लासेस वेयर आफ्टर वन पीरियड, सेकंड पीरियड इफ यू टेक, चिल्ड्रन आल्सो विल स्टार्ट टू रेजिस्ट. नई लाइफ है, एडजस्ट होना इसके साथ. ठीक है भाई, सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं. f function from R to R and fx equal to 1 plus x square. Fx equal to 1 plus x square. Check it's 1 minus. पहले तो मैं ये जज कर लेता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ. अलग से मैं ग्राफ में ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा. You know कैसे x square plus 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे? x स्क्वायर का ग्राफ पता है, अभी भी तो ड्रॉ किया था, यू शेप पैराबोला. x स्क्वायर प्लस 1 हाउ टू ड्रॉ? x स्क्वायर प्लस 1 अगर आपको ड्रॉ करना है तो द मेथड इज दैट x स्क्वायर ग्राफ यू टेक, यू नो दिस इज x स्क्वायर ग्राफ एंड दिस ग्राफ यू अपलिफ्ट 1 यूनिट and if you do that you will get this like this. This is the graph of x square plus 1. ठीक है, so you can see horizontal line if you draw it will give a cut at more than 1 point. तो 1 नहीं है actually, तो नहीं है तो we will not prove in that manner, right? We will either give example or you draw the graph and write direct results. This is what? This is not 1. Explanation please you write. Horizontal line gives a cut at more than 1 point, that can be one explanation. And onto के लिए प्लीज की रेंज निकाल लीजिए, है ना. रेंज मुझे दिख रही है यहाँ पे, रेंज ये है रेंज इसकी क्या 1 से लेके इनफाइनाइट, क्लोज 1 कॉमा इंफिनिटी रेंज. एंड रेंज इज नॉट सेम एज, रेंज will be what? Will be closed 1 comma infinity, and this is not same as codomain R. So not onto. रेंज फाइंड आउट करने में अगर किसी को कुछ परेशानी है then please talk to me separately through any medium and it is very easy, है ना, you will get it. तो समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा. कुछ अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो just clear it, है ना, with your friends, with me or like that. Question number 8, have a look please. Eighth question is easy, but we have to write it properly. Question 8 is function f is there from a cross b to b cross a and such that f of a comma b is equal to b comma a. Right? So let's look at how this function is working. Show that it is a bijective function. पहले तो हम एक
तस्वीर देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है ये फंक्शन. और of course a rough diagram है. I don't know about a cross B actual set here. उसके that may be an infinite set, that may be an uncountable set. I don't know, but roughly. Right. A cross B अब जो कुछ भी हो, but it contains ordered pairs. Right. इसके अंदर क्या है? Ordered pairs भरे पड़े हैं. So कुछ इस तरह की इसमें चीजें होंगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनकी सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, हर जगह हम नहीं कर सकते, बट okay. And B cross A, what it will contain? B cross A also is a Cartesian product. It will also contain ordered pairs. उसमें कुछ इस तरह की किसी को रिवर्स कर दीजिए. This kind of ordered pairs will be there. पहले अपना intuition apply कर लेते हैं कि whether this function actually one or onto. तो इसके लिए हमको ये रूल देखना पड़ेगा कि फंक्शन काम किस तरह कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है कि how it is working. A comma B, the image is now B comma A. So A comma B element is being mapped to B comma A. Simply reverse the elements of ordered pair and you get the image of A comma B. Right? So you know A1 comma B1 the image will be B1 comma A. Is it? A2 comma B2 the image will be B2 comma A2 and etc. and etc. and etc. क्या लग रहा है आपको? Whether it will be 1 whether all domain points are going to different images or is there any chance of common images? मुझे तो नहीं लगता कोई चांस नहीं मिलता common images का. And whether ontoness is there, whether all codomain points are engaged, whether all codomain points are image points. अगर मैं यहाँ कोई randomly एक x, y ले लूँ या 1, 2 ले लूँ, whether it will have a pre-image, हाँ ये हमको रूल समझ आ रहा है कि ये किसकी इमेज रहा होगा, ये जरूर यहाँ पे 2, 1 की इमेज रहा होगा, है ना. तो हर कोई पॉइंट का शर्तिया क्या होगा, इमेज पॉइंट होगा ही होगा. ऑन्टोनेस है इसमें, वननेस भी है. ये हमारा इंट्यूशन से हमने इसमें समझ में आ रहा है. अब बात ये कि हमें लिखना कैसे है, बिकॉज एक्चुअल सेट ये नहीं है, ये हो सकता है अनकाउंटेबल सेट. तो वी हैव टू राइट इन जनरल एंड वी हैव टू राइट प्रॉपर्ली. एक्चुअली इट इज 1, एक्चुअली इट इज onto. So let us write in a proper manner. That was only for understanding, right? This is a rough sortation, not a part of our solution. 1. So you keep remember the basic definition of oneness. You know how to do 1. You should begin with fx equal to fy, and you should bring the conclusion that x equal to y. So to prove oneness, begin with let f and let me assign the indices. F a1 b1 is same as f a2 b2. Here x itself is some ordered pair, so I have written one ordered pair, and y also some other ordered pair, right? And then analyze and furthermore and bring the conclusion what a1 b1 is equal to a2 b2. Okay, that is 2. F a1 b1 means what? F means b comma a. F ab means b comma a. So F a1 b1 means what? b1 comma a as per the rule, and this will be b2 comma a2, right? And then apply the logic that when two ordered pairs are equal, their respective elements are separately equal. Means b1 equal to b2 and what? And a1 equal to a2, right? And then directly write the final line which you have to bring. You have to bring what? a1 b1 equal to a2 b2. I'm directly writing because things are same. So a1 b1 will be same as a2 b2. I started with in the format fx equal to fy, and I got the conclusion x equal to y. It means what? It means f is 1. So f is 1. Correct? Now let us prove ontoness. For ontoness, keep remember the definition. Definition says that every f function is onto if for onto f will be onto if for every y belongs to codomain, there exists some x belongs to domain such that what?
equal to fx equal to y, isn't it? That is the meaning of onto. So how to prove? You start with a random element in codomain. I'm writing again that f works from where to where? A cross B to B cross A. What you have to do? You have to start with an element in codomain. कुछ मैं ले लेता हूँ, let कुछ भी ले लिया मैंने. Suppose let u comma b belongs to B cross A. B cross A का कोई एलिमेंट उठाना है तो उस एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी? उसकी शक्ल होगी u comma b टाइप. एक ऑर्डर्ड पेयर ही रहा होगा ना. और ये भी आप मन में ध्यान रखिए कि वो एक्चुअली में इस इमेज किसकी होगा. एरो डायग्राम से कैसे समझ आ गया कि इमेजेस कैसे असाइन हो रही है. डोमेन पॉइंट्स को रिवर्स कर दो तो इमेजेस बन रही है. तो एक्चुअली u b किसकी इमेज रहा होगा डोमेन में? b u की. तो वही मैं वर्ड्स में लिखने जा रहा हूं. Let u b belongs to B cross A, then there exists v u belongs to domain A cross B such that what? F of b u is equal to u b. ठीक है. तो आप बात समझे कि हमने यहाँ पे किया क्या? हमने ये कोडोमेन में एक एलिमेंट उठाया और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक डोमेन में एलिमेंट बता दिया कि ये देखो वहां पे एक डोमेन में एक एलिमेंट रखा हुआ है. किस तरह से कि उस डोमेन एलिमेंट की ये इमेज बन रहा है कि u कॉमा. ठीक है. अर्थ ये हुआ, द मीनिंग इज दैट ऑल कोडोमेन पॉइंट्स आर द इमेज पॉइंट्स. यू टेक रैंडम पॉइंट ऑफ कोडोमेन and we will have a pre-image. So that's why this function is onto. ठीक है. आप इसको समझिएगा and please write it properly. Right? Can we take almost it is going to be 50 minutes. That's all about question number 7 and 8 also. Question 9th is hints only. A function from n to n and some rule is there. Naturals to naturals it is defined. The best method is arrow diagram. You draw arrow diagram, write your direct answers. Question number 10th is real minus 3 to real minus 1. Either apply this method, this is best. Definition method is best for question number 10th. 11th and 12th, easily multiple choice questions easily can be solved by graph. Right, direct answers you can write, but please write all the questions. Revise, write properly, and discuss your doubts with me. I'll be happy to get all the doubts sent to me. Thank you, and keep doing your work, and submitting your work is very important. I'm not happy with the people who have not submitted the work to me. Right? Please submit your work, and I and you both will be super happy. Right? Thank you.